Morning, everyone. On behalf of Bhartiya Vitta Salahkar Samiti, I would like to welcome everyone at the full-day conclave on wealth creation from investing in capital markets. I am CA Astha Gupta, and I shall be the convener for the first 3 sessions of the day. Request everyone to join us at the earliest. We at BVSS have a ritual of beginning our seminars with the lamp lighting ceremony to seek blessings of Ma Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. For this auspicious gesture, I would like to invite the strong pillars of BVSS present amongst us. We have CA Anil Sharma ji, CA Pramod Narula ji, Ashok sir, our keynote speaker of the day. Mukesh ji, please. C. Anil Maheshwari ji. And Hanmanlu sir as well. He's come all the way from Hyderabad to join us. Thank you so much, sir. Thank you so much. Everyone to please rise up for Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsnam Pulakitayamini, Phulla Kusumita Drumadal Shobhini, Suhasini, Sumadhur Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Bharat Mata Ki Jai. Please settle down. Today's conclave is very unique. This is the first time that Bhartiya Vitta Salahkar Samiti BVSS is hosting a full-day conclave dedicated exclusively to wealth creation and investing in capital markets. We are honored to have a seasoned professional, CA Anil Sharma ji, present amongst us, whom I'll be inviting to deliver his welcome address. CA Anil Sharma ji is in practice for the last 40 years. He's a senior partner at Messrs. A. Sharma & Company, a CA firm based in New Delhi. He's a part-time member in National Financial Reporting Authority, appointed by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India for a period of 3 years till 2023. He is an adjunct faculty with the Indian Institute of Corporate Affairs, set up by the MCA, Government of India. He was a non-executive director of UCO Bank, appointed by the Ministry of Finance, Government of India for a period of 3 years. He was also a special invitee to the committee set up by the MCA to frame the company's auditor's report order, CARO 2020. He's a member of the Expert Advisory Committee of ICSI. He's also a member of 2 special committees appointed by the Honorable High Court of Delhi to refund money to deposit holders to those companies under liquidation. He was a special invitee to NACAS, set up by the Ministry of Corporate Affairs in 2014 to 2018. He's a co-opted member of the Committee on Corporate Laws and Corporate Governance of ICAI for the year 2021.
He's a regular speaker and orator at various programs, seminars organized by various institutes and training colleges on topics on company law, FEMA, NBFCs, accounting, and auditing standards. He's actively associated with NGOs working in social sector. Welcome, Anilji. Thank you very much, Astha, for elaborate introduction, and very good morning to all of you. Respected Puneet Agarwal ji, President of Bhartiya Vitta Salahkar Samiti, Mr. Ashok Agarwal, and Mr. Mukesh Gupta, who are going to be our key speakers for this first sessions. I welcome, and all the participants, I welcome you all. As Astha has rightly mentioned, that BVSS has, for the first time, ventured into this new area. And Puneet ji was very, forthcoming on this, that we must also explore and expose our membership to this area, which is definitely very relevant to all of us. So, now if we look at just a few words on the topic wealth creation from capital market, I would just like to refer to a statement which was made by legendary investor Warren Buffett. He said, if you don't find a way to make money while you sleep, you will have to work till you die. What actually he wanted to say, what he meant by this statement is that the key objective of wealth creation is the ability to generate wealth passively by investing money that has been earned previously. So there are multiple objectives of wealth creation, along with different time horizons, which are important to really strategize to achieve a varied goal, which may be short-term, medium, or long-term. And as the type and goal of time horizon varies from one individual to another, there is no single guaranteed way to create wealth. So today we have experts with us who are going to tell us how to really create wealth from capital market. Of course, investment in the capital market is one of the best avenue to help you create wealth because it beats inflation and compounds at higher rate than other products. But definitely there are lots of pitfalls that have to be taken seriously while investing in capital market. Of course, there is a very clear-cut distinction when we talk about investing and when we trade in capital market. So that distinction would also be definitely be forthcoming in this particular conclave. With the right knowledge and skill, one can form the strategy to build wealth from investment in capital market. And very interesting quote which I just noted from the website of one of the key speakers. He said, investment management should be like watching grass grow or paint dry. So it means that if you really want to create wealth, patience and a timeline is definitely an important one. So we have very, I would say, senior industry experts lined up. Mr. Ashish Somaya from White Oak Capital Mutual Fund, Mr. Sushant Bansali from Ambit Asset Management, Mr. Tej Shah from Marcellus Investment Management, and of course, Mr. Damodar Agarwal from SMC Capital Limited. They are going to be, along with Ashok ji and Mukesh Gupta ji, and both of them are industry veteran. And during the day, Mr. Subhash Agarwal and Mr. Praveen Kant, who are also senior investors,
and experts in this industry. They would also be joining us. As you know, that topic for the conclave, we have devised, and very beautifully they have divided the topics into four, this entire conclave into 4 topics. Young India, ideally suited for the millennial and Gen X. And the second topic is Digital India, how digitally we can create wealth, and India's infra and capex push. And finally, there's going to be a panel discussion where we would be talking about India Vision 2030 and 2050 and way forward for wealth creation. So this was the short introduction to the topic. And once again, I welcome you all. And I'm sure by the end of the day, you would definitely be in a position to really come with this idea how to really create wealth from capital market. Thank you very much. Thank you so much for your words of wisdom, Anilji. We could not have asked for a better start to the day. Next up, I would like to invite our current president of BVSS, CA turned advocate, Puneet Agrawalji. Puneet Agrawalji has 18 years of experience in providing tax and legal services and is the founding partner of ALA Legal, a firm specializing in indirect tax litigation and advisory services. He is author of various books, including much acclaimed The Complete GST Referencer. He is the chief editor of blog gstlaw.india and also the editor of Vitt Patrika, the newsletter of BVSS. Puneetji, welcome. Thank you, Astha. Chairman Advisory Board BVSS Subhashji in absentia. Advisory Board members of BVSS, past presidents, immediately past President Vipin sir, Secretary, our General Secretary Sandeep ji, all the senior members of the profession, younger colleagues, my dear friends, a warm good morning to all of you. As it has been pointed out by our advisory board member Anil sir, that this is the first time that we are doing a full day conclave on investing. And I think what better time it could have been, the way India is progressing. And the economic progress is definitely going to lead us to wealth creation. But for that, I think we have to understand what is the meaning of wealth creation. Anil sir has given a very good, I would say, a description called, it is like watching the paint dry or the grass grow. Howsoever you keep watching it, it will not grow immediately. Howsoever you keep watching it, it will not dry immediately. So it's a patience game. And that's why if you see the topic that has been curated, and a lot of thought has got even in the designation of this topic, it is wealth creation, and that wealth creation from investing. A lot of us go haywire in the daily price movement, which is a price ticker they call it. It keeps going up, it keeps going down. It's like, typically what is that price ticker? अगर आपने कभी मंडी में शाम को भाव देखा हो, if you go to, many of you would have gone with your mothers, at least in your childhood, to the local market, the weekly market. What happens when you go in the beginning, there is a different price. When you go at the end, everyone is shouting at the top of his voice कि भाई आलू जो 15 रुपए किलो था वो 5 रुपए किलो हो गया types. That is what a ticker means. It's just demand and supply. But would wealth be created only by looking at the ticker, or would it be created by identifying the fundamentals, the process, and then waiting? And that is what this seminar was conceptualized to be. I would like to give you some statistics. What really is meant by wealth creation? If you look at Asian Paints, from 2000 to 2023, it has given a return of 320 times ex-dividend. Dividend is separate. 320 times means 1 lakh invested in 2000 would have become 3 crores 20 lakh rupees. If
if you look at, for example, Kotak Bank, it would have been more than 100 times. If you look at, and there are not, I am not talking about 2-3 companies, there would be several of such types, and I can name many of them: Titan, Nestle, there can be HDFC Bank, there can be Berger Paints, Page Industries, and the list can go on and on and on. But the point is that even these companies would have gone through a massive drawdowns. These companies would have gone through massive tickers going up and down, and those tickers could have gone even for continuous 2 to 3 years period. It is quite possible that they would have seen massive drawdowns. So why have we then called the industry veterans? So if I talk about Ashok ji, he would definitely have a career spanning more than 30 years. Mukesh ji sitting here, who helps us in many people in wealth management. He is an industry veteran, having experience again in decades. And all the speakers, there are few speakers, name has already been given, they are flying specially to address us from Mumbai. And they are managing AUMs in thousands and thousands of crores. They know how to think long term, and that is why we are talking about 2030. We are talking about 2050, because many of us, I am seeing here, we have IITians sitting here, we have IIMs sitting here, we have chartered accountants, we have lawyers, and many of them are very, very young. So how to create that multi-decadal wealth creation opportunity is what the topic is all about. So friends, I would like to give some more statistics to you. For example, if you see the rail network, the road network, or the airways network, I am a very avid traveler. I can tell you the quality of trains that I have seen transforming in the last 10 years. It is mind-boggling. The amount of time that is being saved by, for example, trains like Vande Bharat, the amount of time which is being saved on the road because of this fast tags, because of GST, because of elimination of state-wise boundaries which were hitherto there in the trade, that is immensely helping our trade. The states are becoming seamless. There is seamless trade happening throughout the country. Logistics is growing by the day. Consumption is growing by the day. And if that is the order of the day, how do we look India progressing? We have already become 5th largest economy or 4th largest. Anil sir will be better to tell. But I know that we are going to become 3rd largest in not more than a decade. And we are, as per the Government of India projections, we are going to become 7 to 10 times of GDP in next 25 years. So if that kind of progress we are talking about, and then comes the corona, we have seen that it has turned from an adversity, it has become a great global advantage to India. Everyone wants to now partner with India in the global supply chain because they do not have confidence on those countries who were really of prominence till now. Because cost is not the only factor, it is the trust factor which India has given. The strong leadership, the strong conviction of the people in human relationships. We care for human relationships. We are not only, this is what the character of our country is. And that is what would lead us to economic progress. And then I ask, is it new for our country? If you go four centuries back, we were 26% of the global GDP. So economic progress is not new to our country. It was to come, it is going to come, and it is there, we have arrived. So it can be a colossal wealth creation opportunity. I think today's seminar, we have got a very good response. The seats got full within, I think, 3 or 4 days. We had to close registrations. In the inaugural session, the hall is almost full. This is the testimony that this topic is extremely relevant for wealth creation. And I must tell you, many of us may not have time to sit for the entire day, but if you will sit, you are going to get immense value. We have given pointers to the speakers. They will be addressing your questions. They will be addressing your queries. So be glued to your seats. They are going to serve you tea at least 3-4 times. So you will not be allowed to fall asleep. There will be a lot of interesting things. So I'm sure that we are going to learn a lot in the program. One very important aspect why we are looking at this opportunity is the young demography of our country. Look at the way in which our youngsters are getting educated. Look at the way they are developing their entrepreneurial skills. Look at the way startups are coming in our country. We can only think, and I would like to give you one statistic that if India is today using one AC,
then to the proportion China is using 200 air conditioners. I'm not comparing with USA. China is using 200 air conditioners. You can see what kind of an opportunity lies ahead. So I think we are looking at an opportunity of 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years of serious wealth creation. So we look at this opportunity. I welcome all of you. And I would like to, before parting and before giving it back to Astha, I would like to make a special thanks to our Mukesh ji, who have really helped us in conceptualizing this program, in helping put things together, because he is a veteran in this industry. I would like to thank all those speakers. They are extremely experienced speakers. We have already talked, and you will be hearing them, that they have really accepted that they are taking so much time from their schedules. Even coming from, of course, coming from Delhi is also a great thing, but they are coming all the way from Bombay also. This shows the seriousness with which they are all working. And I would like to thank the entire advisory board. Praveen sir is sitting here. He has always been a great support to us. Anil sir is sitting here. Vipin sir has taken a lot of efforts in bringing all the program together. Sandeep ji, of course, always his hard work is there. So with this, I welcome you, and I am sure that we have started the session with Ma Saraswati's blessings. Her blessings will be there. It's a learning session. It's a session, and we are strong believer that Lakshmi follows Saraswati. So thank you, namaskar. Thank you for joining all of us. Thank you. Thank you, Puneetji, for setting such a wonderful tone to today's conclave. So without any further ado, let's kickstart the first session of today, Young India Ideally Suited for the Millennials and Gen Z. Today's generation of Indians are equipped with great exposure, opportunities, and knowledge when it comes to investing in different financial instruments. From traditional stocks, bonds, and mutual funds to new alternative investment fund, real estate and investment infrastructure funds, they have plethora of options. So I would like to invite the panelists of the first session. The session will be chaired by CA Mukesh Gupta Sirji. Sir, please join us on the dais. So Mukesh Gupta ji is a fellow chartered accountant and a certified financial planner. He runs a specialist private wealth management firm with the name of WC Securities Private Limited, which was nominated as Advisor of the Year by CNBC. WC Securities has managed over rupees 1,000 crore plus of client assets. He occasionally writes for newspapers and appears on TV channels on matters related to personal finance. Next, we'll move on to the keynote speaker of today's first session, CA Ashok Kumar Agrawal ji. It's our honor to have you on the panel, sir. Ashok Kumar Agrawal ji is the promoter and executive chairman of the company Globe Capital Market Limited, which manages a daily volume of whopping $237 billion. He is also the chief mentor of CPA, Commodity Participant Association of India, an association of commodity and equity brokers. He was elected as the youngest ever president of the Delhi Stock Exchange Association in 1993, 1994, and 2000. For his valuable contribution to the growth of business of the exchange, he was also awarded the Vyapar Shri Award by the Delhi Stock Exchange Association Limited. He was awarded with the National Citizenship Award 1993 by revered late Mother Teresa for his outstanding contribution in the development of Indian capital markets. He was a member of the Executive Committee of NSE and currently is a member of Advisory Committee of NSE, BSE, and MCX. I would also like to request C. Akshat Maheshwari to join the panel for delivering the vote of thanks. Now I would like to request the chairman of the session, Ashok ji, to start the session with his opening remarks. Mukesh, I'm so sorry. Yeah, good morning, everyone. As Modi ji said, we will be reaching 5 trillion very soon, and our market has already reached 4 trillion. Our GDP is yet to reach there. So we are growing faster and faster. Just for your information, our first trillion was touched in 2007, and second trillion took 10.2 years, almost 10 years. Third trillion came in 3.8 years, and 4 trillion came in just 2.5 years.
तो बी वेरी, दी स्पीड इज़ गेटिंग फास्टर एंड फास्टर। ऐसा ना हो कि जब आज से 15-20 साल बाद आपके बच्चे बोले कि आपका आधार कार्ड भी लिंक था पैन कार्ड के साथ, आपका अकाउंट भी एक्टिव था, आप क्या कर रहे थे, आपको ये नहीं बोलना कि मैं सो रहा था। तो यू नीड टू पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेट इन राइट वे, नॉट इन द स्पेकुलेटिव फैशन, बट वी नीड टू इन्वेस्ट इन द राइट फैशन। तो ये अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आई एम इन दिस लाइन ओवर 25 ईयर, बट द पेस इट इज़ डूइंग, इट इज़ वर्किंग, द वेल्थ इज़ ग्रोइंग। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ हम देख रहे हैं कि देयर वेल्थ इज मल्टीप्लाइंग, हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेसेज एज वेल इन द स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में हैं। तो दिस इज द एप टॉपिक जो उन्होंने बड़ा टाइमली लिया है पुनीत जी ने, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम। तो पहले क्या होता था कि पहले अर्लियर देयर वर वेरी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। हम व्हेन माय फादर यूज्ड टू इन्वेस्ट ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट, सम पोस्ट ऑफिस स्कीम, LIC, something like that, and stock market was also very inefficient. But now a person sitting in a village can invest in crypto, he can invest in international market. I know a couple of my clients, they are very remote places and they are in many hell lot of money. They are investing in most REITs, bonds, bill discounting, and everything is available on the mobile आपके पास है। तो आज की डेट में अपॉर्चुनिटी है सभी के पास, आप नए नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव सीन मैनी ऑफ द टाइम, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, दे वर्क हार्ड फॉर मेकिंग द मनी, बट व्हेन इट कम टू इन्वेस्टिंग दे इन्वेस्ट इन ए वेरी कैजुअल मैनर। थोड़ा टीवी से सुना, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, कहीं कोई टिप मिल गई, एंड दे जस्ट इन्वेस्ट। तो जो हार्ड अर्न मनी है वो उसको फ्रूटफुली इन्वेस्ट नहीं करते। जितना एफर्ट उन्होंने उसमें किया ना, उसको पैसा अर्न करने में, अगर उसका 10% भी अगर वो उसमें एनालाइज करके थोड़ा सा, या इफ़ यू कैन नॉट एनालाइज तो एटलीस्ट यू टेक द हेल्प ऑफ सम एडवाइजर, नॉट मी, एनीवन। आप थोड़ा एफर्ट जरूर करें। आप दिन रात काम करके पैसा कमाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन वेरी कैजुअल मैनर इफ़ यू इन्वेस्ट, तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट वेल्थ। Actually, internet has become a great leveler. Everybody had a equal information, and whether in any geography you are there, you have the same level of information. तो पहले होता था कि there is a Bombay club, there is a Madras club, Delhi club, वो क्लब को privilege है, only they will have the opportunity, उन्हीं को information आएगी. But with the transparency in the capital market, everyone has the same level of access of information and timely information. So if you put some effort in analyzing the way we have done while we were doing our CA, जो effort हमने पढ़ने में लगाया था, but when we invest उस टाइम पे कोई effort नहीं लगाते। वो कहते हैं, वो उन्होंने बोला है कि ये वाला शेयर ले लो, ये डबल होने वाला है 30 दिन के अंदर। Then we don't see कि बैलेंस शीट में क्या है, उसकी वो प्रमोटर ने प्लेज कर दिया है, उस पर डेट कितना चल रहा है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ROCE क्या है, वो जो सारे फार्मूला हमने उस टाइम पढ़े थे, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर नॉट अप्लाइंग। तो वर्क हार्डर, मेक मनी हार्डर, but while investing also we need to put little more effort. And the compounding में what we see, if you for the younger generation, the SIP is growing by the day. Now we have 17,000 crore of monthly asset. ये हमारा FIA के फ्लो होते थे साल में। जब मार्केट इनिशियल पीरियड में 2003 to 2007 अगर साल में 14-15 हज़ार करोड़ रुपये या 25 हज़ार करोड़ रुपये आता तो मार्केट हमारा कई टाइम मल्टीप्लाई हो जाता था। तो अब हम 17,000 of the domestic sources we are getting it. So as you might have heard about the power of compounding 15-15-15, जैसे चूँकि थंब रूल ही याद रहते हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। देयर इज ए कैलकुलेशन, अगर आप 15,000 की SIP, इफ़ यू डू इट फॉर 15 ईयर and if you are able to generate 15% kind of return, it becomes 1 crore over a period of 15 years. And our index has given over 16% return over 40 years. So that is achievable without apply any mind. आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करते, it's a no-brainer. Even if you put money in the index, you are able to get around 15%. And if you continue it for another 15 years, means 30 years, so that 1 crore becomes 10 crore. एंड 10 करोड़ में आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, योर ओन कंट्रीब्यूशन जस्ट 54 लाख। तो बाकी 9.5 करोड़ कहाँ से है, दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट वो इट कम्स इन विद इन द टाइम। तो वो ऐसे नहीं हुआ कि आपने कभी टिप लिया, कभी शॉर्ट लॉस लिया, कभी स्टॉप लॉस लिया, कभी डेरिवेटिव किया। तो उस तरह से मतलब यू कैन मेक मनी बट यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ। फॉर क्रिएटिंग वेल्थ यू नीड टू वेट। जैसे पहले बोला था कि
वाज द पेंट ड्राई है, ग्रास को बढ़ते हुए देखना है, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। कंपाउंडिंग तभी होगी। आउट ऑफ 10 करोड़ योर ओन कंट्री जस्ट 5। हमारे बड़े सारे क्लाइंट हैं हु आर ओवर 15 ईयर, देयर ओन कंट्रीब्यूशन देयर पोर्टफोलियो इज less than 20%. 80% has come from the market only because they were patient enough. So beware of that. This one derivative thing also. जो अभी data publish हुआ है कि in the F&O we are in the exceptional deliverable volume का India is having a 475 time of delivery volume और जो second country है उसका 25 time है। तो आप देखिए कि the speculation, मतलब we need to aware about this कि हमें थोड़ा speculation से बचना है if we have to create wealth। आपने जो हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है तो वो थोड़ा उससे बचें। वो टेम्पटिंग बहुत होता है। इफ यू गो ऑन द विजिट एनी यूट्यूब वीडियो एंड यू टॉक टू समवन, ही विल से कि आई एम मेकिंग जस्ट 3-4-5% काइंड ऑफ मनी, मतलब देन इफ यू हैव टू, देयर सर्टेन पीपल, 91% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी, ओनली 9% आर मेकिंग। इफ यू एक्चुअली हैव टू मेक मनी देन कम इन दैट 9% क्लब। In the data, 1% people are making 50% of the money. So then put your brain hard, work little harder कि वो कैसे अचीव कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा उधर लगाना है 9% वालों की तरफ, नॉट इन द टिप वे कि आपने कोई भी लिया और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करके स्टार्ट कर दिया एंड यू नॉट मेकिंग एनी मनी। तो कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो उसको पता है वो रिसीव करता है, बाकी लोग सराउंडिंग को देते हैं। और लॉन्ग टर्म में एज आई सेड कि लॉन्ग टर्म इज़ द की। जैसे जस्ट आई मेंशन कि वो आउट ऑफ 10 करोड़ उसका अपना कंट्रीब्यूशन इतना था। जो स्टडी है कि यूएस में स्टडी हुई थी कि हु इज़ द बेस्ट इन्वेस्टर, तो स्टडी निकल गई थी डेड इन्वेस्टर इज द बेस्ट इन्वेस्टर, क्योंकि वो लेके भूल जाता है या जो मोस्ट इनएक्टिव पर्सन है दे ऑल्सो मेक मनी। तो वी नीड टू, व्हेन वी इन्वेस्ट वी हैव टू क्रिएट द वेल्थ। तो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करना है। व्हेन वी डू एनी बिजनेस तो हम ऐसा नहीं करते कि हम 1 महीने में या 6 महीने में कॉल लेते हैं हम इसको बंद कर देंगे। व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग तो ऑल्सो अगेन वी आर नो सेइंग हम 6 महीने में, देयर में भी रफ पैचेज ऑल्सो, तो वी नीड टू राइड इट आउट। तो वो राइड आउट करेंगे जब बैड पीरियड को हम करेंगे तभी हम अच्छे टाइम पे कर पाएंगे। तो ये सारे इशूज में मिस्टर अशोक जी थोड़ा डील करेंगे उसमें। एंड ऑलवेज हैव ए गोल लिंक रिजल्ट। हम अगर गोल के साथ लिंक करें तो हमारा फिर हमारी जो टेम्पटेशन होती है ना उस पैसे को टच करने की, वी आर गोइंग हियर टू देयर, तो हम अपने क्लाइंट को वैसे देयर इज नो एडवांटेज इन्वेस्टिंग इन माइनर नेम, बट वी एडवाइज टू आवर इन्वेस्टर कि आप माइनर के नाम से करो। तो माइनर के नाम से क्या करता है कि वो एक गोल उनके माइंड में आता है कि ये पैसा मेरे बच्चे का है, इसको टच नहीं करना। तो बाकी पैसे वो टच करेगा बट उस पैसे को टच नहीं करेगा। तो मतलब बेसिकली, बट इवन इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग माइनर नेम, आप हर इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ लिंक करके चलें। If you link it with the goal, तो you will stay invested for longer term. And the asset allocation is the key. Don't put all money in one basket. तो अगर if you can, and even by diversifying your asset also, your return increases. If you, and right now it is possible with the advent of technology, you can invest, sitting in India, you can invest anywhere, global, AI technology or water or anything you want. तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इन्वेस्टमेंट हैज़ टू फॉर लॉन्ग टर्म, अवॉइड टेम्पटेशन जो शॉर्ट टर्म में आते हैं कि F&O करते हैं, महीने का 4% कमाते हैं, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। वर्क लिटिल हार्डर ऑन द व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग, डोंट गो बाय द टिप। अपना थोड़ा सा माइंड ज़रूर अप्लाई करें। तो जैसे मिस्टर निक बुर्रे फेमस इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड कहते हैं कि इन्वेस्टर का सबसे वर्स्ट एनिमी वो खुद ही है। वही अपने माइंड को, बेसिकली मार्केट में रिटर्न है। इफ़ यू सी कि ओवर 40 ईयर इंडेक्स हैज गिवन 16% रिटर्न, तो उससे बेटर प्रोडक्ट क्या है? एंड दैट टू टैक्स फ्री। अभी तक तो टैक्स फ्री था 2018 तक। बट ये कि हम अपने ही दुश्मन हैं, हम गलत टाइम पे, किसी टाइम पे गलत एक्शन लेते हैं, किसी टाइम पैसा लेते हैं। तो इन्वेस्टर फॉर लिटिल लॉन्गर पीरियड, राइड आउट द रफ पैचेज, जो बीच में रफ पैचेज आएंगे। एंड देन अब जो हमारा मोदी जी का है कि वी विल बी रीचिंग दी 5 ट्रिलियन, स्टॉक मार्केट है ऑलरेडी रीच फॉर, बाई 2027 वी विल बी 4th लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड। तो वी आर इन ए वेरी गुड राइड। दी ओनली थिंग हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for your valuable insights, Mukesh ji.
Our keynote speaker will be taking us through the investing opportunities available for young India, leading from creation, management, and preservation of wealth in stock market investing, compounding, lessons on personal finance, goal-based investing, different avenues of investing, asset allocation, pros and cons of debts, mutual funds, and portfolio management services. Mukesh ji has already, touched upon certain topics, but with detail. Ashok ji will taking us through for that. Ashok ji, please welcome. Good morning. So, all the dignitaries on the dais, dignitaries in the audience, and friends. They say 19th century belonged to Europe. 20th century belonged to America. And the 21st century will belong to India and China. But it looks like it is only India. चाइना को तो माँ से भी प्रॉब्लम है और दीदी से भी प्रॉब्लम है. और जिस आदमी को माँ और दीदी दोनों से प्रॉब्लम हो तो दिक्कत रहती है. So when I say माँ, it is Jack Ma. That they were doing very well, and suddenly government put brakes, and the whole game changed. Didi is a app like you have Uber, Ola. So it is a app where you can book your car. So there also it was doing very well, and they put brakes. So what is happening in China is a country, it was a communist country in politics, but it was a capitalist country in business. But suddenly, the top leadership, they are having problems with money making. They are having problems with businessmen getting too big. Yeah. And of course, the problem has started. Every day now the news is more about the defaults that are happening in China than the GDP growth that was happening in China. Of course, even on GDP, I'll talk to you. Now, friends, the topic is wealth creation from investing in capital market. तो कोई आदमी बात करता है आपको कि जी आप ये काम करिए, तो सबसे पहले आपको अपने क्रेडेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं. If you are saying to me that you do this, then you have to prove that, okay, why should I do this? So what is your track record? So as Mukesh ji also said, just take the case of Sensex. Sensex, the base is 1980 and 100. Anybody who invested 100 rupees in Sensex in 1980, today it is worth 69,800 or 70,000, let us say. So 700 times. So as Puneet ji said, Asian Paint, even if you have missed investing in a good company like Asian Paint, and you are an average investor, and you have invested in Sensex, you can still make 700 times in 43 years. And again, long-term investing, wealth creation. There is we are all talking about long-term, short-term, trading, investment. So basically, if you want income, you do trade. But if you want wealth, you invest. और जैसे अनिल जी ने कहा था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट,
तो आपको सोने में भी दिक्कत आएगी, आपको काम करना पड़ेगा बिना सोए। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में बाय इन्वेस्टिंग, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट wealth by also making money by trading, but then you have to take it as a career. You can't do trading just like that कि आपको किसी ने कह दिया ये शेयर ले लो, आपने ले लिया। So you have to have distinguish between trading and investment. Now long term, of course 43 years में तो 700 गुना हो गया। आप अपना सारा पैसा कैपिटल मार्केट में लगा दो फिर तो, बट उसके अगेंस्ट आपको पता है कोरोना में क्या हुआ था। निफ्टी केम डाउन टू 7,500, टुडे इट इज अराउंड 21,000। So you can't invest all your money in capital market. We should understand capital market equity is a risk capital. So you can't put all your egg in one basket. You have to allocate your asset. So you can only invest in equity money which you are willing to lose. Of course, lose in the short term, not in the long term. Money which you don't want to use immediately. Maybe lose is a very strong word, so I'm not trying to scare you all. But you should be investing only a part of your saving in capital market. और गलती से भी बोरो करके इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है। That is the worst you can do, because it is definitely a recipe for disaster. Only put a part of your savings, and if you are young, of course there are the different theories. You can put 60-65%, and even in capital market, there are different instruments. Of course, there is equity. There are equity like REIT, which are comparatively stable. InvIT, where the chances of it going down substantially are very low. But then the chances of it making money substantially for you are also low. So it will give you a steady return. It may not give you substantial return. But also look at alternate asset. So let us say gold. इंडिया की एक प्रॉब्लम भी है. We are always having current account deficit. And one of the big reason we are having current account deficit or trade deficit is import of gold. अगर आप एक्चुअली गोल्ड इज नॉट कंजम्पशन, बट हमारे जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर गोल्ड को भी करंट अकाउंट डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में काउंट करते हैं. गोल्ड इज एक्चुअली ए इन्वेस्टमेंट, बट इट्स ए डेड इन्वेस्टमेंट. एनीवे, सो इवन गोल्ड ओवर दिस लास्ट 30 years has given you a CAGR of 9%. So just to give you the context, और आपको वेरी लॉन्ग टर्म में भी फर्क बताता हूं. निफ्टी इंडेक्स वाज स्टार्टेड इन November 95. The base is 1000. Today it is around 21,000. So around 28 years में without dividend it has given you a CAGR of around 12%. बट अगर आप डिविडेंड इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज ऑल दिस इंडेक्सेस डोंट इंक्लूड डिविडेंड, सो
dividend in an index is around 2 to 2.5%. So in Nifty, if you have invested 1 lakh rupees in Nifty, today in 28 years, today it is around 36 lakh, including dividend. Same way, let us say you have invested 1 lakh rupees in a bank FD at 7% rate of interest, which are the current rate of interest, which is again a good rate because इससे पहले तो 5% ही होता था. That will give you around 6.64 lakh in 28 years. I am comparing Nifty 95 to today. So 6 गुना, and you don't have to put your mind too much. You can go and buy a ETF, index, or if you are all chartered accountants, you can buy the stocks yourself. आपके यहाँ जो ट्रेडिंग होती है, निफ्टी की बास्केट ट्रेडिंग होती है, एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता है. You just tell your broker, I want to buy the basket. You click the button, you will buy the basket. Only thing is, there are changes in the index composition. So whenever there is a change, you have to sell the share which is going out and you have to buy the share which is getting included. And without much effort, without involving experts, you can make steady return in a country like India. Now, I was comparing India and China. You know, let us compare for 30 years. In 1993, the GDP of India was around $250 billion. And GDP of China was around $500 million. Okay. Now today the GDP of India is around 3.5 trillion. And GDP of China 18 plus trillion. Huge. So they have grown around 36 times and we have grown only around 13 times. Okay, but let us just look at the capital market return. And capital market return, China has given you around 6% CAGR, 4% in dollar terms, because when you compare with China, you cannot compare in local currency. And India has given you 6% CAGR in dollar terms in these 30 years. Huh? 6 in dollar terms. So because India's currency in 1993, I'm taking 1993 because 30 years I'm comparing, was 2590. And today it is 83. China's currency was 5.77 and today it is 7.12. So the depreciation of Indian currency is huge. Depreciation of Chinese currency is much less. In fact, that also demolishes the theory कि एक्सपोर्ट के लिए करेंसी डेप्रिसिएशन अच्छा है. चाइना के एक्सपोर्ट बहुत कम करेंसी डेप्रिसिएशन या बिना करेंसी डेप्रिसिएशन के मल्टीप्लाई कर गए हैं. सो ऑल दोज इकोनॉमिस्ट हु से कि करेंसी डेप्रिसिएशन इज गुड फॉर एक्सपोर्ट, आई डोंट नो. द डेटा, the reality of life does not show that. Anyway, so despite China growing almost 3 times more in GDP terms than India, India का 13 टाइम है, उनका 36 टाइम है. उनका इंडिया का $250 बिलियन से 3.5 ट्रिलियन है, उनका $500 बिलियन से 18 ट्रिलियन है. The capital market return in China is much less. So either it is a problem with the numbers or it is a profitless growth.
Because if your GDP is growing that fast, your capital market return should have been fantastic, phenomenal. Now, coming to, investment and alternate market, we have equity market, we have commodity market. But let us understand, in commodity market, except bullion, which is an investment product, no other product is an investment product. That is either a hedging product or a trading product. You can't invest for long term. Of course, exchange में तो एग्री कमोडिटी भी ट्रेड होता है. एग्री कमोडिटी आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो आपका वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सपायरी डेट से ख़त्म हो जाएगा. मेटल्स, if you invest in metals, there is a metal cycle. So, zinc, copper, aluminium. So, these are not investment product. If there is any investment product, it is bullion, gold and silver. Diamond भी नहीं है, because diamond 2004 की जो प्राइस थी, उस पे आ गया है. गोल्ड वहाँ से मल्टीपल टाइम हो गया है और डायमंड हैज कम डाउन. सो if there are any investment product, it is bullion. So bullion means silver and gold. So that covers your commodity market. Now let us talk about, because this is what Punitji wanted me to cover, all the aspects. PMS, AIF, mutual fund. PMS, you have to invest minimum 50 lakh. AIF, you have to invest minimum 1 crore. Mutual fund, you can invest even 1,000 rupees. Most of the PMS, in fact, in last couple of years, after SEBI has defined, earlier the PMS or the mutual fund return was misleading. They were giving you return and they were not including the cost. जो फीस वो लेते थे ना, वो आपको जो रिटर्न बताते थे, एडवर्टाइज करते थे, उसमें वो जो फीस चार्ज करते थे वो उसको गोल कर जाते थे. जो कंपैरिजन होता था वो इंडेक्स से होता था, इंडेक्स वाज नॉट इंक्लूडिंग डिविडेंड्स. नाउ व्हाट सेबी हैज मैंडेटेड इज द म्यूचुअल फंड, the PMSs, the AIF, they will have to give you comparison based on the real return and with a index which includes the dividend. Now, after this comparison, more than 50% of the mutual funds are underperforming the index. So, when we say experts, we have to take the experts with a pinch of salt. I mean, if you invest in a index yourself, there is more than 50% chance that you will outperform your expert fund manager. और इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आई टोल्ड यू, इन एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट, बास्केट इन्वेस्टिंग. आप अपने ब्रोकर को बोलो कि मेरे को इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी इंडेक्स में करना है, तो निफ्टी के जो 50 शेयर हैं, यू जस्ट प्रेस ए बटन, आपको 10 लाख रुपए लेने हैं, 10 लाख रुपए के सेम कंपोजिशन में वो आपके शेयर खरीद लेगा. सो 50 शेयर आपके, कोई एक शेयर आएगा, कोई 5 शेयर आएंगे, कोई 10 शेयर आएंगे. ऑफकोर्स अगर आपको 1000 रुपये करने हैं तो वो नहीं होगा, बट आपको 5 लाख करने हैं तो यू कैन मेक
a investment in index. So that is one way of investing. Now, how to select a share? I mean, आप सब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कोर्स अकाउंटेंट्स हैं, तो आई विल नॉट गिव यू द बुक किस नॉलेज, बिकॉज वो सब तो IITN भी IIM तो उनको तो और भी ज़्यादा पता है मेरे से, तो लॉयर्स भी बैठे हैं. या सो व्हाट आई एम सेइंग इज हाउ टू इन्वेस्ट इन ए शेयर. ऑफ कोर्स गुड मैनेजमेंट, गुड प्रोडक्ट, you know, all those things you just Google, you will know how to invest in a share. I mean, I don't want to bore you with that. I'll give you my practical life experience. Yeah. So my son joined me in my company. So I told him ki you have to handle our proprietary trading. Okay. So we have equity brokerage, we have commodity brokerage. So I took him to a round of the whole office. This is where the equity is getting traded. This is where is commodities getting traded. So I observed that every day he was going to the commodity desk on a regular basis. जबकि मैंने उसको कहा था कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है. तो वन डे आई आस्क्ड हिम, एंड ऑफ कोर्स आई गेव हिम सम अमाउंट कि आप ये इन्वेस्ट करो, कि आप ये कमोडिटी में बार बार क्यों जाते हो, तो आपको तो इक्विटी में करना है. बोला मैं देख रहा था ये टायर के प्राइसेस जो हैं, रबड़ के प्राइसेस तो मल्टी ईयर लो हैं, और टायर के कंपनी के शेयर भी मल्टी ईयर लो हैं. एंड आई लुक्ड एट हिज पोर्टफोलियो, ही इज इन्वेस्टेड इन टायर शेयर्स, सीएट, Apollo, blah, 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 MRF. And I think CET at that time was around maybe 100, 200. He invested, and within a year it started rising, और अभी तो शायद 2-2.5 हज़ार का भाव है. So that is real investing. I hope I have explained. Because टायर के लिए आपको रबड़ चाहिए होता है. रबड़ इज ए की रॉ मटेरियल फॉर टायर्स. Automobile industry in India was doing very well, so that is where you use tires. Original supply equipment supplier होते हैं जो. So टायर का कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है. टायर के शेयर की प्राइस बहुत नीचे गिरी हुई है. इट्स नो ब्रेनर. सो बेसिकली दैट इज व्हाट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट. दैट इज व्हाट आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज. अभी वो ही इज हैंडलिंग माई PMS, और हमारा PMS का मतलब जब उसने शुरू किया, वी वर नॉट फोकस्ड ऑन PMS. हमारा PMS का कॉर्पस 10-15 करोड़ ही था. अभी उसने 800 करोड़ कर दिए. एंड विदाउट एनी नोबडी वी नो कि ग्लोब इज जस्ट वर्ड ऑफ माउथ. सो बेसिकली यू हैव टू पुट योर माइंड टू इट. एंड ऑल ऑफ यू आर chartered accountants, course accountants, IITNs, MBAs, lawyers. Common sense. That's it. You don't need technical jargons. The biggest requirement is common sense. Of course, it is not common. Only the name is common. I think I have taken sufficient time allotted to me. Thank you very much for inviting me, and hope all of you make very good investment. Thank you. Thank you so much, Ashok ji. A big round of applause for Ashok ji, please. तो उसमें शेयर्स हैं, एज यू सजेस्टेड, तो वो डिलीवरी होता है उसमें, दिस इज सिंपली लाइक निफ्टी. डिलीवरी होता है.
और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप F&O में ट्रेड करते हैं, दैट इज वन F&O ट्रेड विच यू कैन डू इफ यू कैन, बिकॉज उसमें रोल ओवर की, अगर आप अपना पैसा किसी, मतलब रोल ओवर की कोस्ट निफ्टी के अंदर 6-7% होती है साल की, तो अगर आप निफ्टी खरीद लें, व्हेन आई से 6-7%, बिकॉज रोल ओवर में आपने जो बदला देना पड़ता है, तो आप निफ्टी भी खरीद सकते हैं, निफ्टी 20 भी खरीद सकते हैं, निफ्टी ETF भी खरीद सकते हैं, और बिकॉज उन सब में जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो सबसे कम होती है. एंड ऑफ कोर्स यू कैन बाई डायरेक्ट शेयर्स विच इज द बेस्ट, एंड ऑल ऑफ यू कैन डू इट. अभी तो मार्केट में जो फंड मैनेजमेंट वाले हैं उनके पास भी बहुत पैसे आ रहे हैं, पर डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास भी बहुत पैसे आ रहे हैं. एंड फॉर ए चेंज, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आर मेकिंग मोर मनी, small investors are making more money than the mutual fund investors. Thank you. Basically, in a simple basis, one can buy ETF. As he said, there are various kind of ETF. You buy and they in equal proportion, they automatically buy it. And the other simple option is. हाँ, वहाँ सीधे आप ETF बाई कर सकते हैं. वहाँ पे देयर वेरियस ETF लिस्टेड, सारे म्यूचुअल फंड्स के भी ETF मिल जाएंगे आपको. आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी डीमैट अकाउंट, आप सिंपल जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, देन दीज आर कॉल्ड इंडेक्स फंड्स. उस सिंपल आप जैसे नॉर्मल फंड लेते हैं, यू कैन बाय निफ्टी इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ऑल काइंड ऑफ इंडेक्स यू कैन बाय इट. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग सर. आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिस्क बोले थे. म्यूचुअल फंड्स पे जरा कम आप गेन्स आ रहे हैं बोल के बोले. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉफिट जो है ना जरा कम आ रहा है बोल के, उतना प्रॉफिटेबल नहीं है कि जितना इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करे जैसे. कम आ रहा है आप कह रहे हैं? यस. तो मैंने अभी बोला ना कि एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट परसेंटेज. आई थिंक 76% ऑफ द mutual fund have underperformed the index in last 3 years and maybe 5 years. Yes. 76%. अभी ये फिगर पक्का नहीं है, इसलिए मैंने मोर देन 50% बोल दिया. सो कम आ रहा है, बिकॉज हो क्या रहा है, पहले जो कंपैरिजन होता था वो इन टोटल, अभी कंपैरिजन होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स से. सो व्हेन यू से टोटल रिटर्न इंडेक्स, इट इंक्लूड्स द डिविडेंड. यस. एक तो वो हो गया. दूसरा, पहले वो जो अपने आपको जो रिटर्न की परसेंटेज बताते थे वो अपना खर्चे के बिना बताते थे. अगर म्यूचुअल फंड को आपको 2% की फीस देनी है, ही शुड डिजर्व इट. इफ ही इज गिविंग यू less than the index return, why should you pay him 2% fees? You can invest directly. Yes. And if you are a investor who does not have time to invest, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो ना. और इंडिया में नेक्स्ट 3 डिकेड्स, इनफैक्ट 2050 में वो कह रहे हैं कि इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और 2nd लार्जेस्ट, मोर देन US. अगर हम इस मेंटालिटी को छोड़ दें कि करेंसी डेप्रिसिएशन इज गुड, बिकॉज ये जो GDP का जो कैलकुलेशन होता है ना, इसके अंदर करेंसी प्लेज ए वेरी बिग रोल. अगर आपका रुपी 25 रुपए से 83 हो गया, तो आपकी मतलब जो परफॉर्मेंस है वो तो 1/3 रह गई ना. आपकी जो GDP की ग्रोथ है वो 1/3 रह गई. अगर आपकी करेंसी चाइना की तरह $25 ही रहती या 25 की 30-35 हो जाती, देन योर GDP यू वुड हैव बीन 3rd. इनफैक्ट अगर आप अपनी करेंसी डेप्रिसिएशन की मेंटालिटी को चेंज कर दें, बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ये करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं. अगर ये होता तो चाइना का एक्सपोर्ट
हमारे से इतने ज़्यादा नहीं बढ़ता, इंडिया का तो एक्सपोर्ट होता ही नहीं है ना, वी आर नोवेयर इन एक्सपोर्टेबल. लुक एट चाइना. सो व्हेन यू look at GDP, you have to look at currency also. So currency depreciation mentality needs to be looked at. Answering your question, yes. mutual fund underperformance. Mutual fund underperformance may be reason that IPOs highly priced overvalues also the mutual funds are investing. And that is taking a lot of time the companies to stabilize their performance, upgrade their performance. And that is also one of the reason the mutual funds revenue in share of profit is less. This is my opinion, sir. नहीं, बेसिकली देयर आर 2 पॉइंट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट. एक तो है कि म्यूचुअल फंड कम पैसा बना रहा है किसके कंपेरेटिवली. एक तो दे रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच आर पीपल आर बाइंग XYZ स्टॉक्स. आप उससे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली अभी का डेटा वो सजेस्ट कर रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर मेकिंग मनी, बट दैट इज ए वार्निंग साइन ऑल्सो कि जब आपको पैसा कमाना लगे कि बहुत ईजी हो गया है. मतलब दिस आई एम फ्रॉम माई 28 ईयर एक्सपीरियंस. जब हमें लगा कि पैसा कमाना है सो इजी, ये तो कुछ नहीं है, आप आज लो और पता नहीं लोग क्या करते हैं, एवरीबडी बिकमिंग एडवाइजर, दैट इज़ द डेंजरस पॉइंट. तो वहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन है. और दूसरा जो है आपको देखना है इंडेक्स के कंपेरिजन में बना रहे हैं या नहीं बना रहे. मतलब इंडेक्स से आउट परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे. ही राइटली सेड कि अराउंड 75% परफॉर्म कर रहे हैं. देन वी हैव टू लुक फॉर, देन वी हैव 2 ऑप्शन. वी कैन इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड और वी लुक फॉर द स्कीम्स विच आर आउट परफॉर्मिंग गिविंग द अल्फा. सो जैसे हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर आशीष सुमैया फ्रॉम वाइट ओक म्यूचुअल फंड, इफ वी सी देयर ट्रैक रिकॉर्ड, दे हैव ए ग्रेट अल्फा इन देयर म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड इन PMS ऑल्सो. सो दैट ही विल बी हाईलाइटिंग दोज पॉइंट. तो हमें 2 पॉइंट देखना है. एक तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना, दैट इज़ द वन थिंग. एक है कि हम जो डायरेक्ट स्टॉक का जो चल रहा है ना कि वो एवरीबडी इज बिकमिंग ए, वो लगता है कि अपनी गॉड है. अभी कई लोगों को फीलिंग ऐसा आ गया कि अपनी भगवान है. वो फीलिंग से बचना है, क्योंकि ये फीलिंग जब आती है उसके बाद का पीरियड हमने बहुत अच्छा नहीं देखा है एज पर माई एक्सपीरियंस. थैंक यू. मुकेश जी, एक चीज़ मैं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत से यंग लोग बैठे हैं, ये शेयर इन्वेस्टिंग हम करते क्यों हैं? व्हाट इज़ ए शेयर? थोड़ा सा फंडामेंटल आप और अशोक जी ज़रा इसको देखें कि फंडामेंटल क्या है और वो शेयर वैल्यू डिराइव किससे करता है. वहाँ पर भी बहुत बड़ा गैप है. वी आर सेइंग दैट इन्वेस्ट, बट वाई आर वी इन्वेस्टिंग? गोल्ड सबको दिखता है, लैंड सबको दिखती है, ये हम ले क्या रहे हैं पीस ऑफ पेपर, ये है क्या? और ये वैल्यू कैसे डिराइव करता है लॉन्ग टर्म में जो हम वेटिंग बोलते हैं? तो व्हाट इज़ दैट? उसको थोड़ा सा आप यंगस्टर्स को स्पेशली एड्रेस करें इस बार. You want me to address? Yeah. Okay, so when you buy a share, basically you become a partner in that company. तो आप कोई शेयर खरीदते हैं ना, तो आपको उस बिजनेस में आपने पार्टनरशिप कर ली. इसका मतलब आपको कोई भी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि ये कंपनी इस वैल्यू पे, इस कोस्ट पे पार्टनर बनने के लिए डिजर्व भी करती है कि नहीं करती है. तो जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पार्टनर बनने के लिए, या किसी के भी आप पार्टनर बनते हैं, जो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, नेचर ऑफ द बिजनेस, वेदर यू अंडरस्टैंड द बिजनेस. बिकॉज अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है, हाउ विल यू टेक ए कॉल? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस एंड देन यू हैव टू सी द फ्यूचर. बिकॉज शेयर मार्केट डिस्काउंट्स द फ्यूचर. पास्ट इज पास्ट. सेंसेक्स ने जो रिटर्न पास्ट में दिया वो दिया. पॉइंट इज चाइना ने जो पास्ट में रिटर्न दिया, जो GDP ग्रोथ हुआ वो हुआ. पॉइंट इज will it be repeated in the next 20-30 years? Like, I am not bullish so much on China in next 20-30 years. I am very bullish on India in next 20-30 years. So, और अगर larger context में देखें तो basically you have to look at the country also, whether it is a country worth investing. Because जापान में last 30-40 साल से कैपिटल मार्केट में कोई रिटर्न नहीं आया. तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया और रिटर्न आएगा ही. यू हैव टू सी वेदर द कंट्री इज हैविंग पोटेंशियल टू ग्रो, एंड देन वेदर द कंपनी हैज पोटेंशियल टू ग्रो. इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, इंडिया इज नाउ नंबर 1.
बट फॉरगेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उन चारों का अगर आप टोटल भी कर लें, उनकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है दे आर लेस देन इंडिया. आई जस्ट गूगल्ड कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन कितनी है, तो माई गॉव ऐप पे उन्होंने लिखा एक साल में 99.5 मिलियन. 99.5 मिलियन है वो, उस पर लिखा हुआ है. मेरे को लगा यार तो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, नहीं मेरी बात सुनो. तो जब मैंने गूगल किया, उसके अगले दिन मैंने दोबारा गूगल किया, तो नीचे वो हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने लिखा हुआ है, उसी गूगल पे लिखा हुआ है, वी आर वेरी सॉरी, द फिगर्स आर सो ह्यूमंगस that even we got confused. It is not million, it is billion. So now we have 10 crore transaction per month. And अभी क्या अपकमिंग में क्या डिसाइड करने वाला है, that you as a country will grow, you as a country will deliver value. IT, digital transformation is one of the very big criteria. So when you, even in capital market, companies which don't use technology, they are going to face problem. You have to change the mindset. आपको तो समय के हिसाब से बदलना पड़ता है ना. अगर आप समय के हिसाब से नहीं बदलते हो तो प्रॉब्लम होने वाली है. And we are all lucky to be in India. India's time has arrived. अभी तो कल आरबीआई ने भी, अगर आपने जो आरबीआई को देखा हो, their projection for India's growth was 6.5%. They have upgraded it to 7%. और उसमें भी कह रहे हैं even this figure is conservative. तो सारी दुनिया कह रही है कि 2050 तक इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट, मे बी द सेकेंड लार्जेस्ट. आई हैव ए हंच, मे बी वी विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2050. When you say that investment has to be for a longer period, so does it mean that we need not review it on a periodical basis? And second point is, do we necessarily have to have a portfolio, or I have seen some of the investors making investment only in, let's say, 1 or 2 shares or instruments. So what is your take on that? A periodical review of the investment and portfolio. Yeah, Anil ji, the conventional wisdom is don't put all your egg in one basket. तो एक दो शेयर में तो इन्वेस्ट करने से अच्छी चीज नहीं है, काम नहीं चलने वाला है. ऑफ कोर्स यू हैव टू रिव्यू. द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट. अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे, आप इंडेक्स का कंपोजिशन देखो, जो वेदर इट इज सेंसेक्स, वेदर इट इज डाउ जोन्स, जो शेयर आज से 50 साल पहले डाउ जोन्स में थे, या जो शेयर 1980 या 1990 या 2000 में इंडेक्स के कंपोजिशन में थे, वो शेयर आज कहीं है ही नहीं. देयर यूज्ड टू बी ए शेयर कॉल्ड रोहतास इंडस्ट्रीज. इट वाज ए कंपनी जिसके पास पूरी, आई मीन दिस इज ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, साहूजैन ग्रुप, सब कुछ था, सीमेंट, बला बला बला. इट इज फिनिश्ड. सो इफ यू डोंट रिव्यू योर पोर्टफोलियो constantly, you will be in trouble. So you have to review your portfolio constantly, but constantly does not mean every minute or every hour or every day. मतलब constantly करो. कोई इवेंट हो गया, कोई उस जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है उस सेक्टर में कुछ चेंज हो गया, और रिव्यू इट मे बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली एट द मोस्ट.
But don't, I mean, no review, no. Daily review, no. But review, definitely. Ashok ji, as you said, you know, the market is already peaked. और मुकेश जी ने कहा वो हेयर से ही शुरू हो गई है. So what's your word of caution for the, you know, young people as to how they should take the markets going forward? Because Nifty is already at 21,000. Okay. देखिए, वैसे तो एक शेयर मार्केट में कहावत है, किसी को नहीं पता होता कि पीक कब है और कब बॉटम है. बट यस, अभी ऑल टाइम हाई है मार्केट, एंड इमीडिएट टर्म्स में तो थोड़ा, बिकॉज जब सारे फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, यू नो, ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग. बीजेपी इलेक्शन जीत गई 3 स्टेट के अंदर, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एवरीबडी. Everybody is now saying Modi in 2024 is a certainty. And when I say Modi is a certainty and it is good, not in terms of my political affiliation, in terms of economic benefit. Because जो वो रेवड़ी जो बात होती है, मोदी जी रेवड़ी देते हैं तो पर वो रेवड़ी उनके देने का तरीका अलग है. They don't write off loans. They don't compromise with fiscal deficit. So even if it is distribution, it is a disciplined distribution, which is good for the economy, and it is a direct benefit transfer. तो वो पैसा बीच में गायब नहीं होता है. एक्चुअली मैं पहले तो बोलने वाला था कि इंडिया की इकोनॉमी में ब्लैक मनी कम हो गई है, पर वो कल 200-300 करोड़ कैश मिल गया तो मैं वो बोला नहीं. बिकॉज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, आई डोंट नो डीमोनेटाइजेशन से कितना बेनिफिट हुआ, बट द बिगेस्ट बेनिफिट इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. आई मीन, even though black money quantum may have risen, but the velocity of money, cash transactions have definitely gone down. And just I to mean, add day that, to day में cash transactions कम हो रही है. नहीं, पर वो होल्ड है, they are holding it. It's very difficult for them to use it. Maybe that is why that 200-300 crore cash was there. उसको समझ में नहीं आ रहा था यूज कहाँ करें. हाँ, सर्कुलेशन कम हो गया. just to add that, basically I would say कि जैसे मोदी जी का नहीं $5 trillion होगा, 4 trillion में हम लोग ऑलरेडी हैं, तो we have to see the bigger picture in mind. If the economy is going to grow, तो market has to follow. अभी market पहले पहुंच गया, GDP will follow. तो आज मतलब in the times to come, speed may be slower, it is going faster, money is going to be made. पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है. मार्केट, वी आर एट ऑल टाइम हाई. अगर ऑल टाइम हाई पे तो हम आए ही है ना. अगर 100 से स्टार्ट किया, वी आर एट 70,000, तो एवरी टाइम देयर वाज सम ऑल टाइम हाई. तो ऑल टाइम हाई डजंट मीन कि इट विल नॉट गो फर्दर अप, बट व्हाट वी हैव टू सी कि जो सर्टेन पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन, थोड़ा कॉशन है, देन वी हैव टू सी कि विच सेक्टर में जाना है. तो उसके लिए वी इधर वी इन्वेस्ट अवर सेल्फ, वी स्टडी अवर सेल्फ, और वी टेक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल एडवाइजर. So that is the market has to go. If GDP has to grow, market has to grow. तो वो तो है. और ये आज के डेट में इंडिया में पैसा नहीं बनाना, तो ये तो है कि आप एलिवेटर ऊपर आ रहे हो और आप नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो. इफ़ यू आर इन द मार्केट, यू विल मेक मनी. उसको मार्केट पैसा ना बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे इफ यू आर इन द मार्केट. बट वो जो थोड़ा एक्सेस हो रहा है मार्केट में, वो उससे थोड़ा बचना है. तो आप खुद स्टडी करें और टेक दी प्रोफेशनल हेल्प. दैट द ओनली थिंग. There is always a right time in the market, and I will just quote you one instance. एक बार रामदेव अग्रवाल जी को आप सब लोग जानते ही हैं, मोतीलाल वाले. एक बार वो सेशन ले रहे थे और सडनली उनका वो बीच में वो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बाहर को SMS आया उनके पास. देन बाद में बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास डिविडेंड का एड हुआ था, एंड आई डिडंट वांटेड टू मिस. आई डोंट मिस वन डे. व्हेन इकोनॉमी हैज़ टू ग्रो, उनका बड़ा लार्जर, वो बड़ा क्लियर है कि जब मार्केट को बढ़ना ही है,
अब यहाँ से गिर के बढ़ेगा या यहाँ से बढ़ेगा मुझे नहीं पता, बट हैज़ टू ग्रो, तो मेरे को टाइम क्यों करना है? तो जो जितना पैसा वेस्ट हुआ है, जो टाइमिंग में वेटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट हुआ है, इन्वेस्ट करने से नहीं हुआ। हो सकता है आपने आज इन्वेस्ट किया, मार्केट करेक्ट हुआ, वो थोड़े दिन बाद बढ़ जाएगा, मे बी योर वेट इज लिटिल लॉन्गर, या तो यू नीड टू सी द लॉन्गर पिक्चर। तो टाइमिंग में हमारे पास करोड़ों के चेक पड़े रह जाते हो, कभी ऑनर नहीं होते। We have one last question from the back. सर, जो आपने एक पॉइंट रेस किया था ETFs का, एक्चुअली हुआ क्या है, पिछले 2 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जो निफ्टी है उसमें 7 to 8 स्टॉक्स का वेटेज अराउंड 50-60% हो गया है। एंड अगर मैं ETFs में इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज, निफ्टी के ETF में, दैट इज माई फॉर्चून्स आर टाइड टू दोज 8-9 कंपनीज परफॉर्मिंग। इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, चाहे पूरा मार्केट चले जाए वो नहीं चलेगा, चाहे कितने बाकी जो बाकी 40 स्टॉक्स हैं दे मे परफॉर्म वेल, बट द निफ्टी रिटर्न्स विल नॉट बी सो हाई। सो व्हाट डज वन डू इन सच अ केस? नहीं, आई डोंट नो, मतलब इफ यू आर बाइंग द निफ्टी ETF, इट विल रिप्लिकेट द निफ्टी ETF। निफ्टी में रिटर्न आएगा तो आपको रिटर्न आएगा, निफ्टी में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। निफ्टी अब 8-9 स्टॉक्स का वेटेज ही 50-60% है, तो वो अगर 8-9 स्टॉक्स पे रिटर्न नहीं आएगा तो निफ्टी में भी रिटर्न फिर नहीं हो गया है। हाँ। आप मिड कैप भी खरीद सकते हैं, वो 100 शेयर्स होते हैं। सो यू सी देयर इज ए मिड कैप इंडेक्स which is composed of 100 shares. So that also is available. You can buy that. And in fact, you can buy a part of that and part of that. और वो जो 8 कंपनियों का वेट अभी जो परफॉर्म नहीं कर रही है ना, मे बी जो उन्होंने कहा कि मार्केट इज एट 21,000 पीक हो गया है, मे बी they have not performed, but they are good companies, they are making good profit, maybe it is the time now they will perform. So that is why we talk about long term investing. वो there is always a period जब वो growth नहीं होती है, तो वो long term में it evens out. So it may be an opportunity कि वो perform नहीं करी, अब करेगी। And when we talk about this ETF, they are not just plain vanilla ETF. They are various kind of ETF. They are factor investing. If you just Google it, factor investing, they eliminate their momentum investing, low volatility investing, alpha investing. So there are various kind of products suited for various kind of investor. अगर आपका वो concern है, if you go for the factor investing, वो सारा address हो जाएगा उसमें. Thank you. Thank you so much for this great deliberation. Any other queries, we can take them up in the coffee break. Anyway, we're running out of time. Now I would like to invite CA Praveen Kanji, who is also the founder of our bronze sponsor, Mithun Securities Private Limited, to felicitate our chairman Mukesh Gupta ji with a memento. Ashish ji, please. Thank you so much for a wonderful time, Mukesh ji. And you've answered our queries so well and dealt upon all the subtopics of today. I would also like to invite a very senior member of BVSS, CA Pramod Narula ji, to felicitate our keynote speaker, Ashok Agrawal ji, with a memento. Thank you, Ashok ji, for giving so much valuable time and answering all the queries and touching all the subtopics. For concluding the session, I would like to invite CA Akshit Maheshwari to give vote of thanks and concluding remarks. Good morning, everybody. Thank you, Asta. And I think it was a very engrossing session, the first session of the day, regarding the investing opportunities which for young professionals. I thank Mukesh sir set the context about methods of investing from traditional to more modern techniques of investing, and similarly Ashok sir has also guided us upon how we can invest in in different segments regarding capital market, commodity market, ETF, PMS, and I think it was very informative for me also as a young investor, like what are the methods in which we can invest, and he has guided very well in his presentation. So thank you sir for your detailed presentation, and so I think I'll ask Asta to do the tea break.
Thank you, Akshat. Now we'll break for a quick tea break. We'll assemble back at 11:30 for the next session. Thank you so much for making the first session lively. What a great start to today's conclave. Please, the coffee is being served here.